It has been an incredibly dramatic day. It's the 42nd day of the wrestlers' protest, and today suggested, or it at least began with the possibility that a compromise had been arrived at, the stalemate had been broken, and the wrestlers would be winding up their protest. But that was not correct, because starting with Sakshi Malik, and then Vinesh Phogat, and then Bajrang Punia, who decided to rejoin their government work with the Northern Railways, clarified that their protest is not over. They will continue to protest. And remember, this is a protest that has included tears, emotional scenes, violent scenes, all of them being dragged, some of them being pushed to the ground. But suddenly, it looks like things may have come to a head, and they have been read the Riot Act by the government and told to rejoin their government duties. Remember, all three of these heroes, and they are India's sporting heroes, let there be absolutely no two thoughts about that. All of them have government jobs, and they were asked to rejoin those jobs because they have professional commitments as well. All three of them are officers on special duty, sports with the Northern Railways, in addition to being wrestling champions. But today, Sakshi Malik and then Bajrang Punia and then Vinesh Phogat, after news that they had rejoined work, came out to vociferously clarify that the protest for justice against Brij Bhushan Sharan Singh, the WFI president, does not end. They decried that people were reporting that the wrestling protest had been called off, and insisted that in fact it is going to get only bigger. The question is, what next for this protest? If the three faces, the celebrity faces of this protest, now have to pursue their work commitments, what happens to the street fight? Because that is what it has really been. The lifeblood of this protest has been a dharna on the streets of VIP Delhi. 1 month is a long time in the wait for justice. But is this dangal nearing its end? Sakshi Malik, Bajrang Punia, Vinesh Phogat, the faces of this ongoing wrestlers stir, have joined back their positions in the Northern Railways. So far, they were away from it. They had permission to stay away from work, but now they've been ordered to get back to work in the Indian Railways. This comes 2 days after the wrestlers met with Home Minister Amit Shah on Saturday at his residence in Delhi. That's led to a great deal of speculation over whether some kind of a compromise has been arrived at. Well, all three wrestlers, like I said, have clarified that their stir against the Wrestling Federation boss, Brij Bhushan Sharan Singh, will continue. Their only demand remains arrest Brij Bhushan. Remember, this comes just days after the wrestling protesters had gone to Haridwar to immerse their medals in the Ganga. They didn't eventually immerse their medals, but returned to Delhi after giving their medals to a BKU farmer leader, Naresh Tiket, who had triggered a separate Khap Panchayat solidarity movement. Their return was followed by an ultimatum to the government demanding the arrest of BJP MP Brij Bhushan, the WFI president, before the 9th of June. That is 4 days from now. साक्षी, ये खबरें मीडिया में चल रही हैं कि आपने रेलवेज की नौकरी को दोबारा ज्वाइन कर लिया है और आपने जो है आंदोलन से बैक ऑफ कर दिया है। बिल्कुल आंदोलन से बिल्कुल भी वापस नहीं हटे हैं हम। जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता लड़ाई जारी रहेगी, सत्याग्रह बिल्कुल जारी रहेगा। और रही बात रेलवेज की, तो आंदोलन के साथ साथ अपना 1-2 काम, अपनी जिम्मेवारी मैं निभा रही हूँ। तो 1-2 दिन में ऑफिस का काम देख रही हूँ। और साक्षी, ये कहा जा रहा है कि आंदोलन से आप हट गई हैं, अब आप आंदोलन का हिस्सा नहीं हैं, आपने रेलवे की नौकरी ज्वाइन कर ली है 30 तारीख से। कितनी सच्चाई है? ये मैं क्लियर कर देती हूँ आपको कि जैसे हम रणनीति बना रहे हैं आगे की, आगे हमें क्या करना है और कुछ भी हिंसाजनक ना हो और आगे हम अच्छे से कैसे इस प्रोटेस्ट को बढ़ा सकते हैं, तो उस पर हम काम कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं। और रही बात रेलवेज की, तो मैं OST फर्स्ट हूँ और मेरी बहुत सारी जिम्मेवारी हैं। तो जब तक रणनीतियाँ चल रही हैं, प्रोटेस्ट पे नहीं बैठे हैं, तो मैं यहाँ अपना काम देख रही हूँ। नाबालिग जो लड़की है उसके बारे में भी कुछ जानकारियां आई हैं कि
बयान वापस लिया है पॉक्सो? नहीं, ये सब फेक न्यूज़ हैं। ये हमारे सत्याग्रह, हमारे प्रोटेस्ट को कमज़ोर करने के लिए, आम पब्लिक को हमसे तोड़ने के लिए ये सारी चीज़ें चलाई गई हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। हम इस लड़ाई में ना ही कभी पीछे हटे थे, ना ही कभी हटेंगे। जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता, लड़ाई जारी रहेगी। गृह मंत्री अमित शाह जी से आपकी मुलाकात हुई थी, आपकी और बाकी के प्लेयर्स की। कब मुलाकात हुई? मुलाकात में क्या रहा, क्या निष्कर्ष निकला? नॉर्मल कन्वर्सेशन थी और कुछ नहीं ऐसा फाइनल सॉल्यूशन निकला। हमारा टिल एंड तक यही रहेगा कि अक्यूज्ड को गिरफ्तार करो, उसके ऊपर सीरियस एक्ट लगे, गिरफ्तार करो। नॉर्मल कन्वर्सेशन हुई थी और कुछ नहीं। साक्षी, ये कि बजरंग अकेले रह गए, विनेश और आपने नाम वापस ले लिया? बिल्कुल भी नहीं। हम तीनों एक हैं इस प्रोटेस्ट में, और जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता एक ही रहेंगे, और बिल्कुल भी नाम हमने वापस नहीं लिया है। जैसे जंतर मंतर पे जो घटना हमारे साथ हुई है 28 तारीख को, हमको वहाँ पे ना जाने की परमिशन है। हम जैसे ही इस आंदोलन को वापस धरातल पे लेके आएंगे, वैसे ही जो है हम प्रोटेस्ट वापस शुरू करेंगे। बीच में कोई छोटा मोटा काम होगा वो उस बारे में उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दे दी है। और लगातार 3 दिन से खबर है कि हमारा समझौता हो गया, वो भी झूठ है। पोस्को ने नाम वापस ले लिया उनके पिता का, वो भी बयान आ गया है, वो भी झूठ है। हम जो है लगातार डटे हुए हैं। आगे की जो भी प्रक्रिया होगी वो आपको जल्द बता दी जाएगी।